Assalamu alaikum everyone. Hope so you're fine and enjoying good health. Today again we are here for discuss about this SNC, very hot issue these days. And today we have a guest with us that he is Mr. Umar Khan. Umar, can you please introduce yourself? Right, I want कि आप अपना introduction खुद करवाओ. Assalamu alaikum everyone. This is Umar Khan. I am working as a lecturer at Government Ambala Muslim College, Sargota since 2016. I have been a government servant since 2012. I taught at the university. I also taught at the city school prior to coming into government service. And my subject is English. Okay. फाइन दैट्स ग्रेट टू हियर कि आपने प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर में दोनों में काम किया है बिकॉज हमारी ऑडियंस के लिए हम थोड़ा कंफर्टेबल होकर बात करेंगे क्योंकि बहुत सी मदर्स यहाँ पे कंसर्निंग है बहुत से पेरेंट्स हैं सिस्टर्स हैं जो हमारे टीचर्स हैं वो कंसर्न है इस इशू के हवाले से तो इसलिए हम कंफर्टेबल होकर बात करेंगे ताकि बाकी की समझ में भी आए जी गुलशन Sure. जेनानी अस्सलाम वालेकुम हेलो हाउ आर यू ओके तो पहला जो हमारा क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि आपने गवर्नमेंट में भी प्राइवेट से स्टार्ट किया नाउ यू एंड गवर्नमेंट सेक्टर तो हाउ यू फील दैट कि इसमें कितना डिफरेंस है दोनों सिस्टम के एजुकेशन सिस्टम में कितना डिफरेंस आपको लगा कि प्राइवेट में भी आपने पढ़ाया है और नाउ यू एंड गवर्नमेंट व्हाट यू से अबाउट दिस Well, there is a huge difference in private and government sector. As we know by traditionally myth जो एक मशहूर है गवर्नमेंट स्कूल्स के हवाले से कि वहाँ पर कुछ खास पढ़ाई नहीं होती और टीचर्स आते हैं और वो बच्चों से काम करवाते रहते हैं स्टाफ ये जो बातें हम स्टार्ट से सुनते आ रहे हैं बट व्हेन यू कंपेयर देम विद द फैसिलिटीज दैट वी हैव इन प्राइवेट सेक्टर स्पेशली इन स्कूल साइड that's remarkable. I mean, they are working on a very good standard, I would say. And it's just not only about the facilities that your children would have in a school. It's the overall environment as well. So it affects the personality grooming of children in so many ways. So huge difference, I'd say. Okay, huge difference. You can say it's a big difference. Okay, what is the education standards? You can say कि आपका उसमें देखें ना अब हमारा उसमें आ रहा है एजुकेशन सिस्टम में है डिफरेंस है इन्वायरमेंट में डिफरेंट है तो एसएनसी सिंगल नेशनल करिकुलम इज इट अ गुड आइडिया व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट ये इम्प्लीमेंटेशन इसका होगा तो क्या इम्पैक्ट होगा इसका Well, I cannot certainly speak for the government. In fact, I have to put on a disclaimer that, although I am a lecturer, I'm a government servant, but whatever I'm sharing on your platform are thoroughly my views and my experiences as an educationalist. I've been in field for like 12 years. I've taught at the school side, I've taught at the college side. It was a fun ride. So I had to put this disclaimer on. With that being said, obvious things out of the way. Uh, I believe there are so many pros and cons to this whole thing. It's not just that simple, okay, it's a button that you नो would डाउट turn on and the next day the whole of the curriculum would be the same. As you know that our society is divided into three portions in terms of education like English medium, Urdu medium and then we have madrasas. So the whole idea of this uniform curriculum was that each and every student, whether they are studying in English medium, Urdu medium, or even madrasas, they would have proper opportunities, equal opportunities, and the exposure they get at school should also be equal. So that was, at least to my knowledge, was the intention of implementing this whole idea. But then, if you being an educationalist yourself, you do understand that our educational system is stacked up with layers and layers of complex, I would say, discriminations. You have Urdu medium, you have English medium, okay? Then you have science schools, you have art schools, then you have primary, middle, matric, and then again, there's always discrimination among the levels of the schools. So I believe it is a good idea, but if implemented properly. ओके नाउ हियर इफ एंड बट्स आर सो लॉन्गर कि हम इसको बहुत ज्यादा हमारे पास इफ भी हैं बट भी हैं बट अब हमारा ये है कि बच्चों के हवाले से अगर हम बात करें कि व्हाट आर द व्हाट यू थिंक कि बच्चों के
डोंट यू फील कि बच्चों के ऊपर एक स्ट्रेस आ जाएगा जब आप साइंस कि साइंस एंड एसएसटी इज गोइंग टू बी इन उर्दू? एंड व्हाट डू यू थिंक, आप अगर हम दूसरे ब्रांड स्कूल्स की बात करते हैं, वहां पे पहले इंग्लिश में था, अब वो उसको उर्दू में बच्चे कर पाएंगे इस हवाले से, क्योंकि बाइलिंगुअल आ गया ना, लैंग्वेज का इशू आ गया. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द लैंग्वेज डिफरेंस? Uh, Let me start answering this question by saying the unobvious thing that Hmm. whenever a society or any institution requires rectification or change, sacrifice is required. We No are doubt. far from perfect. We are a developing Hmm. country. We have our own problems. We have our own issues. But if we are to implement this, at least half a generation, directly or indirectly, would be suffering. Not only teachers, students as well. So you have to keep that in mind. With that being said, I believe that nothing is permanent but change. You have got to adapt. You've got to adapt to different changing periods, the time, the trends. You've got to keep up with the world. It's not that you cannot study these subjects in your own language. Like, look at the top six economies of the world: Japan, France, America, England, Germany. They study thoroughly in their own languages. They don't do it. In fact, if you look at their whole budget, they focus so much on education and so little on irrelevant things. So it is a hard nut to crack, but it is achievable. So sacrifice required hoga, but Punjab government, if I look at their performance, they are working day and night. They are making efforts to give trainings to their teachers. There is an institution, Qaede Azam. I can't recall the name. That would at the tip of my tongue. I'd tell you the name in a while. So they are, day and night working for the training of the teachers. Because of course, if you want to bring this Urdu medium level to the level of English medium, so you've got to have a system that supports that change, right? ऐसे तो नहीं हो सकता कि आपके पास ट्रेन टीचर्स नहीं है और आप अगले दिन कहें कि जी मार्च यकम से सारे यूनिफॉर्म सिलेबस पढ़ाएंगे, बिकॉज यू नो इट फॉर अ फैक्ट दैट दीज प्राइवेट सेक्टर्स व्हेन दे हायर देयर टीचर्स, बहुत काट छाट के, बहुत देख के, अपने मतलब का चलने वाला बंदा हायर करता है हर स्कूल, हर प्राइवेट स्कूल, बिकॉज जी दे जी. आर दे हैव टू कीप एन इमेज और लाइक Hmm. एक अच्छा एक्सपीरियंस टीचर एंड ऑल दैट, द ड्रिल. सो बट गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है. एंड अनफॉर्चुनेटली आई Hmm. एम रियली सॉरी टू से दिस, पर सियासी भर्तियां और लाइक एक जो एक बदनाम होते हैं गवर्नमेंट के टीचर, Hmm. स्कूल साइड के, कॉलेज के तो शायद इतने नहीं है, बट इवन देन. But if you ask it on a more grassroots level, I am a college lecturer, right? I am a gardener. I think of myself as a gardener. अब आप मुझे सना ये बताएं कि एक पौधा मेरे पास आता है और मुझे उसकी ट्रिमिंग करनी है, राइट? अब मेरे पास अगर पौधा ही इन्फेक्टेड हालत में पहुंचा है, इफ आई माइट यूज द वर्ड, तो मुझे बताएं मैं क्या करूं? वो बच्चा पांचवी छठी सातवीं मैट्रिक वो करके आया है, लेकिन वो रट्टे पे है. वो इंग्लिश पढ़ सकता है, Hmm. लेकिन वो उसको इंग्लिश समझ में नहीं आती. जस्ट लाइक वी हैव दिस विद अरेबिक, वी कैन रीड इट, वी डोंट रियली अंडरस्टैंड इट. सो अब ऐसे बच्चों को बताएं कॉलेज में क्या, कैसे उनको डील करें? बिकॉज द सो कॉल्ड एलीट क्लास और द प्राइवेट स्कूल्स, दे डू देयर स्टफ इन इंग्लिश. Colleges and universities are already English medium, but these very students, that come from an Urdu background, they really suffer a lot. तो हमें उनको भी साथ लेकर चलना है. दे आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी. आप अगर आप बात करते हैं कि वी ऑट टू बी वेलफेयर स्टेट, तो फिर सिविलाइज्ड माशरों में तो ऐसा ही होता है कि एवरीबडी इज ट्रीटेड इक्वली. आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल द अदर डे. There was a protest in Great Britain, or all the doctors and engineers, they gathered around and like they were saying that you should raise our salaries up to the standard of the teachers because they are so well paid. Just for the record, the salary of a primary school teacher is more than the Prime Minister of England. So I don't know. This Miss Markle said that first off, how can you people be equal to the people who made you? आप कैसे उनके बराबर हो सकते हैं जिन्होंने आपको बनाया है? और आप अगर हमारी इकोनॉमी को देखें सना, तो आप देख लें कि हमारा एजुकेशन पे कितना एक फोकस है. 4%, 6%, 6.5%.
लेकिन यहाँ हम बात So करें बच्चे के ऊपर ना, तो बच्चे को mm-hmm. कैन वी से कि हम वी आर स्टार्ट फ्रॉम द बेस, बाइलिंगुअल जो हमने लेके आना है लैंग्वेज के ऊपर, कैन वी वर्क ऑन दिस बेस फर्स्ट, देन वी मूव्ड अहेड अच्छा, इसमें rather सबसे than पहले तो 1 to 5 सबसे करिकुलम पहले तो मैं चेंज ये हो गया एडिशन है। करता चलूं कि जी जी। आफ्टर द 18th अमेंडमेंट जो हम्म एजुकेशन का डिपार्टमेंट था दैट वाज रेफर टू द प्रोविंसेस, ये एक सूबाई मसला बन गया। सो दे हैव ऑल द जुरिस्डिक्शन कि मतलब उसको जैसे फॉर्मुलेट करना चाहें। अब nobody is stopping us from implementing that system individually in each province. So what was said was कि ये मज़ामीन जो फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक उर्दू ज़बान में पढ़ाए जाएंगे, और आपने SST और एक और सब्जेक्ट का जिक्र किया, तो हाँ it is जी। not mandatory for them to teach them in Urdu. Like they have their own हम्म regional languages as well. You know, there are so many regional languages spoken. If we only talk about district Sargodha, there are like at least half a dozen languages. Urdu, Punjabi, Saraiki, Balochi, Sindhi, और कितनी languages हैं provincially. तो वो सबको हम्म इस तरह से है कि करिकुलम इज लाइक अ बेस लाइन, कि आपका बच्चे को पहली से लेकर उसके प्री स्कूल के अंदर उसको गिनती आती हो या उसको बेसिक फ्रैक्शंस आते हो। अब ये जो निसाबी किताबें होती हैं विच वी कॉल द टेक्स्ट बुक्स, ये हर एरिया के अपने अपने बोर्ड्स होते हैं। अगेन क्वेश्चन कुड बी रेज्ड कि इसको उर्दू में कर दिया, इसको इंग्लिश में भी कर सकते थे, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि एक जारी बात है जो अपर स्ट्राट ऑफ सोसाइटी है उनका जो लेवल है इट्स वेरी काइंड ऑफ लाइक अट्रैक्टिव और लाइक इंग्लिश मीडियम, ताकि बच्चे दे कैन कीप पेस। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम होगी बच्चों को, बट देन अगेन वी एज द पेरेंट्स, वी एज द स्टूडेंट्स एंड वी एज द टीचर्स, हम सब ने इस प्रॉब्लम को मिलके सॉर्ट आउट भी करना है, उसको रेक्टिफाई भी करना है। फाइन। ये तो हो गया हमारा, लेकिन अब हमारा नेक्स्ट है कि शफकत महमूद जो हमारे मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इन्होंने रिसेंटली एक किया है ट्वीट अपना कि मिनिमम जो लर्निंग स्टैंडर्ड्स हमारे होंगे कि दे आर फ्री टू टीच एनी सब्जेक्ट एनी कोई एक्टिविटी जो भी हम कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूल्स वो अपने उसमें एडिशन कर सकते हैं। तो जो प्राइवेट अपना मतलब उसमें एडिशन करेंगे, न्यू सब्जेक्ट्स को कर सकते हैं, न्यू एक्टिविटीज वो अपनी कर सकते हैं, स्ट्रेटजीज को कर सकते हैं, अपनी बुक भी मतलब उसमें ऐड कर सकते हैं। तो क्या इसका इम्पेक्ट गवर्नमेंट पे नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट में कुछ और जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर पे कुछ और जा रहा है? इसका इम्पेक्ट क्या होगा बच्चों के ऊपर? So Sana, basically the problems that we हम्म had with our educational system was in the first place that it discriminates. आप खुद हम्म सोचें, एक लॉजिकल माइंड ये नहीं मानता कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक सर्टन क्लास को फायदा हो और एक मेजोरिटी ऑफ द क्लास जो है वो अट्टे सट्टे पे रहे, और मतलब उस तरह से। सो द अपॉर्चुनिटीज हैव टू बी इक्वल। तो उसी के लिए what the government has come up with two solutions, the first one being the uniform syllabus and the second one is हम्म broad based education. अब ये ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन का सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि आप पहले 10-12 साल बच्चे को एक बेसिक तालीम दिलाएं जो सबकी बराबर होनी चाहिए, एंड देन यू इनकलकेट सर्टेन वेज, जो बात आप कर रही थी कि हर स्कूल को ये है, उनको ये इतना हम्म गैप दिया गया है कि वो डिफरेंट स्किल बेस्ड, ट्रेनिंग बेस्ड, यू नो, बेसिकली बच्चों पे इम्पोज ना करें कि आप ये बने या ये बने, सबको इक्वल चांस मिले, एंड देन दे हैव देयर ऑप्शंस कि मैं यू नो लाइक किसी को अगर टेक्निकल सर्किट ज़्यादा पसंद है, किसी को लिटरेचर ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, कोई ज़रा वो साइंस की तरफ ज़्यादा है, तो बजाय इसके कि हम लोगों ने जो स्ट्राटा बनाए हुए हैं कि क्लास में जो लायक 5-7 लड़के हैं वो हम्म डॉक्टर्स बनेंगे और जो मीडियोकर्स हैं वो बाकी मिडिल क्लास में सेट हो जाएंगे, और अनफॉर्चुनेटली जो सबसे गरीब या नलायक या कमज़ोर होता है उसको हम बना देते हैं मौलवी। तो हम्म अगेन ये हमारी प्रॉब्लम्स है, इसको हमने मिलके सॉर्ट आउट करना है। ये मुश्किल ज़रूर है, it has its problems, but I just like any other Pakistani, I'm hopeful that inshallah it's a long process, it's a long due process, but things will inshallah move towards a more better standing I would say। लेकिन उसके लिए एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा सना कि हम सबको एज पेरेंट्स, एज टीचर्स एंड इवन एज स्टूडेंट्स, हम सबको अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी को खलूस नीयत से एक्सेप्ट करना होगा और चेंज को हमें वेलकम करना होगा। बिकॉज वो जो ऑर्थोडॉक्स माइंड है वो, अब आप हम्म देखें जो करिकुलम हम लोग एज ऑफ राइट नाउ फॉलो कर रहे हैं वो 2006 वाला करिकुलम है।
बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर उसी से लिया गया है, और वो एक बहुत अच्छा करिकुलम था, इट वाज लाइक बैलेंस्ड एनफ। लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये थी कि इट वाज नॉट इंक्लूसिव। अब ये एक बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी, लेकिन दिस यूनिफॉर्म चेंज के साथ सिर्फ इंग्लिश उर्दू वाला चेंज नहीं आया। अब जो इस्लामियात थी, विच वी नो एंड स्टडीड, लाइक जी जी। इस्लामियात और दीनियात, that would be more like would include things like नाजरा एंड अहदीस का याद करना। यस यस। फिर उसमें भी डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स आ जाते हैं, सेक्ट्स का बड़ा आपको पता है सिनेरियो बड़ा सेंसिटिव होता है। तो अब उसको इंक्लूसिव बनाया जा रहा है। आप खुद सोचें सना कि हम लोग 2 महीने पुराना या 1 साल पुराना फोन नहीं इस्तेमाल करते, तो 14-15 साल पुराना करिकुलम, एंड देयर आर थिंग्स विच रियली टर्न मी ऑफ। मुझे बुरा भी लगता है समहाउ, बड़ा ऑड फील होता है कि दिस इज स्ट्रेंज, हम लोग रट्टा मारने वाली मशीनें बना रहे हैं, और बच्चों की मेंटल ग्रूमिंग पे, और उनको उनको उनके अपने अंदर के टैलेंट्स को एक्सप्लोर करने के लिए कुछ भी नहीं है। हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के प्रैक्टिकल्स तो बड़े यू नो तरद्दुद के साथ लेते भी हैं और देते भी हैं। आपको नहीं लगता कि हमें कुछ इंग्लिश का प्रैक्टिकल नुमा भी चीज ऐड करनी चाहिए, और बजाय इसके कि नापी तोली चीजें बच्चों को पढ़ाएं एक जुबान के अंदर, उनको मोर लैंग्वेज ओरिएंटेड बनाना चाहिए, ताकि वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज लेके जॉब्स क्रिएट हों, और फिर वो इस मुआशरे की बेहतरी के लिए, हमारी सोसाइटी की बेहतरी के लिए अमीरों के बच्चों के शाना बशाना चल के दे कुड प्ले एन इक्वल रोल। अच्छा, रिसेंटली आई केम टू नो अबाउट द लैंग्वेज का जो बाइलिंगुअल हमारे है, उसमें इन्होंने थोड़ा सा रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने कर दिया है। यहाँ ये कहाँ तक सही है कि हम दोनों, जिस तरह हम बीएड और एमएड की बात करते हैं तो उसमें दो तरह के क्वेश्चंस इंग्लिश उर्दू दोनों में होते हैं। इट्स अप टू द स्टूडेंट कि वो किस चीज में सॉल्व करना चाहता है। तो यहाँ पर ये जो रिसेंट रिलैक्सेशन दी जा रही है, इज इट बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स? इस तरह तो फिर प्राइवेट सेक्टर पे ये होगा ना कि वो सारे ही उस पे चलेंगे अपने ही तरीके से, फिर वो वहां पे एक्सटेंडेड कहाँ मेंटेन करेगा? देखिए सना, एक बात को समझने की कोशिश करें, वट एवर इज दिस, हम्म, ये सब कुछ हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए और हमारे बच्चों के भले जी। के लिए, राइट? सो वट एवर इज इजी फॉर देम। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों ने इंग्लिश को एक जुबान से ज्यादा वी हैव टर्न्ड इट इनटू एक प्रिविलेज सा बना दिया है। हमारे हम्म, माशरे में मशहूर ये है कि अगर आपको अंग्रेजी बोलनी आती है, तो आप यूं समझें कि आपका 50% काम तो हो गया हुआ है, क्योंकि उसके साथ जुड़ी है कॉलोनियल थॉट। जरा लेवल, एक जेंट्री की उठक बैठक हम्म। के लोग जो अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, हालांकि इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज जस्ट लाइक एनी अदर लैंग्वेज। लेकिन हमारे यहाँ अंग्रेजी को कुछ ज्यादा ही एक स्पेशल प्लेस हासिल हो गया है। एंड इफ यू लुक एट द फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी, तो देखें दफ्तरी मामला अंग्रेजी में, सीएसएस आप इजीली कर सकते हो, आपका जो डोमेन होता है आपकी वर्किंग का वो इतना ब्रॉड हो जाता है। इंग्लिश के साथ आप मैथ्स कॉम को अटैच कर लो, लिटरेचर तो है ही है, एंड इट काइंड ऑफ लाइक इज द ग्लू दैट जॉइंस ऑल ऑफ इट टुगेदर। अब एक Okay, बच्चा जो रट्टा Ahmed, I मार, have a one question that या what is the benefit of this one curriculum? जी, एक क्वेश्चन आया है हमारे पास। What is the benefit of this one curriculum? इसमें क्या बेनिफिट है मैम हमें? इस करिकुलम का फायदा देखें, आई एम नॉट अ विजिट, हम्म, आई कैन नॉट टेल यू फॉर सर्टेन कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, फ्यूचर के बारे में मैं नहीं जानता, ऑल्दो आई कैन टेल यू व्हाट आई बिलीव। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम होपफुल, बिकॉज ऐसे ही होना चाहिए, देर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस हम्म, ऑफ व्हाट यू अर्न। क्योंकि हमारे मुल्क में 22.8 मिलियन बच्चे स्कूलों से हैं ही बाहर, वो स्कूलों में हैं ही नहीं। और इनमें से हम्म, मोस्टली बच्चे जो स्कूल जाते हैं, वो उसमें 60 to 70% मेजोरिटी गरीब फैमिलीज की है, और वो अपने बच्चों को भेजते हैं गवर्नमेंट के स्कूल्स में। जबकि प्राइवेट स्कूल्स जहाँ पे अंग्रेजी मीडियम होता है, वहाँ पर फीसेस बहुत ज़्यादा हैं। हर पेरेंट की ये कोशिश होती है, हर पेरेंट ये चाहता है कि मैं भी अपने बच्चे को एक सर्टन लेवल की तालीम दिलवाऊं, और ये सिर्फ हम्म। प्राइवेट सेक्टर में है, ये गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है। तो हम इस पूरे सिनेरियो को एक एक सर्टन यार्ड स्टिक के थ्रू बराबर करना चाह रहे हैं, दैट एवरीबडी गेट्स टू स्टडी इंग्लिश, सब अंग्रेजी की वही रसाई हासिल करें। वो हमारे यहाँ एक टाट स्कूल का कॉन्सेप्ट चलता है, यानी कि जिसका इंग्लिश लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। कागजों के ऊपर उस स्कूल में, जिस स्कूल से बच्चा पढ़ रहा है, उसमें अंग्रेजी का टीचर भी है, वो इम्तिहान भी ले रहा है, कागजों पे ये बच्चा 5वीं भी पास कर रहा है,
8वीं भी पास कर रहा है और समहाउ वो एक रट्टा मशीन बनता जा रहा है। और फिर यहाँ पर अगेन क्लास डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है। समहाउ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, क्योंकि उनको एसोसिएट किया जाता है लिंगुअली, जैसे कि आप बात कर रही थी उर्दू के साथ, जी जी और एलीट क्लास को एसोसिएट किया जाता है मोर लाइक वेस्टर्न ओरिएंटेड थॉट और लिबरल्स की तरह। तो फिर देयर इज डिस्टिंक्शन। और सफर कौन करता है? बच्चे। तो तमाम तर बच्चों को, चाहे कोई किसी बड़े सरकारी मुलाजिम का बेटा है, किसी एमएनए एमपीए का बेटा है, किसी डॉक्टर का, इंजीनियर का बेटा है, या किसी नायब कासिद का, किसी मजदूर का, किसी गार्ड का, किसी निचले तबके के बंदे का बेटा है, उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए कि वो अपनी तालीम मुकम्मल करके दे कैन सपोर्ट देमसेल्व्स, वो इंडिपेंडेंट हो सकें और इस पूरे बड़े ग्रैंड स्ट्रक्चर में अपना छोटा सा रोल प्ले कर सकें। फाइन, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब नेक्स्ट मेरा आपसे क्वेश्चन ये होगा कि अब हम लोग, आपने एलीट क्लास की बात की है और उसके बाद आपने मीडियोकर की भी बात की, देन आपने मजदूर और वो सारी चीजें बताई। अब जो हमारी एलीट क्लास है उसमें सुनने में ये भी आया है, सुनने में नहीं बल्कि ये प्लानिंग बैक हैंड पे जा रही है, मतलब होने जा रही है, दैट दे आर रेडी टू मूव देयर चिल्ड्रन टूवर्ड्स अब्रॉड। अब इस चीज को हम कैसे रोक सकते हैं? या तो वो अपने बच्चे यहाँ पढ़ाएं, क्योंकि ये हमारे जो एलीट क्लास में हमारे सारे ये फ्यूडल सिस्टम आता है, और फ्यूडल सिस्टम ही अपने बच्चे बाहर भेज रहा है। जब वो इस चीज को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, फिर वो क्यों अपने बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं रख रहे? उनके बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं? इस चीज के ऊपर मुझे बताएं कुछ। मिस सना, हमारा एजुकेशनल सिस्टम बाहर के एजुकेशनल सिस्टम को मीट नहीं करता। और नहीं अगले करता, ठीक है। जी नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। आप जी खुद जी। देख लें, वो हमारे ग्रेजुएट, जो हमारा बीए होता है उसको मानते ही नहीं। हमारे एमए को वो ग्रेजुएट बिल्कुल मानते सही। हैं और हमारे एमफिल को समहाउ हम्म, वो मानते हैं कि जिसने मेजर्स किया, मास्टर्स किया हुआ है। जी जी विद दैट बीइंग सेड, गाड़ी तो मेहरान भी होती है और गाड़ी तो हम्म, मर्सिडीज भी होती है। चार पहियों पे चलती हैं, उनका कॉन्सेप्ट भी ये चलने का सेम है, बट हाउ दे आर सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ड्राइव से, हम्म, इंजन से, लग्जरी से लेकर उसके टॉर्क, उसकी स्पीड, उसकी मेंटेनेंस तक आप इवेल्युएट कर लें। हमारे एजुकेशन सिस्टम को उनके एजुकेशन सिस्टम से कंपेयर करना वुड बी वेरी मच अनफेयर इन द फर्स्ट प्लेस। और सेकेंडली, देखें, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर पॉकेट। ये सारा यस, कुछ आपकी जेब पर डेफिनेटली। डिपेंड करता है। इफ यू कैन अफोर्ड, अफोर्डेबिलिटी अगर आपकी है तो आप बाहर भेजें अपने बच्चे को। और हर पेरेंट की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे अब्रॉड से पढ़ें। लाइक एवरी पर्सन एट द बैक ऑफ देयर माइंड, उनको ये होता है कि हमारे बच्चे अच्छी जगह से पढ़ें। बट देन अगेन जी वी हैव गॉट टू मेक डू विद व्हाट वी हैव। हमने तो उन्हीं मामलात, हालात, वाकयात के साथ सर्वाइव करना है जो हमारे अपने हैं, और वो आपके सामने है। देयर आर गुड प्लेसेस, देयर आर मीडियोकर प्लेसेस, एंड देयर आर प्लेसेस दैट रियली नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। और अगेन, जैसे उर्दू की एक कहावत है कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। तो अब बताएं, कंप्लेन करें तो किसको करें, और जाएं तो कहाँ जाएं, और करें तो क्या करें? जी, I have one more question here. That do you think equal education is equal job opportunities? मतलब होंगी या नहीं होंगी, ये एक क्वेश्चन आया है हमारे पास। देखें, स्टार्टिंग लाइन तो रेस के लिए सेम होनी चाहिए। हम्म, यानी 0 से लेके 100 तक सारे कंटेस्टेंट्स एक से रास्ते पर भागें। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आधे लोग आधा रेस पथरीले सफर पे कर रहे हैं, फिर वो मोटरसाइकिल पे बैठ के चले जाते हैं फिनिश लाइन के पास और आराम से एवरी द विक्ट्री इज इन देयर ग्रास्प। तो बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, जो गवर्नमेंट करना चाह रही है और जो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, वो ये कि एक ऐसी यार्डस्टिक बनाई जाए कि सब बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलें, ताकि वो आई डोंट मीन टू लाइक use the discrimination word that harshly, but there was no way to express what I was trying to think. So we're gonna have to work with what we have got. yes, next question is, do you think one curriculum is the solution to complete with education abroad in way? Yes, abroad, education abroad. देखें, you cannot say for sure that just implementing this uniform curriculum will sort out all our problems, because our problems are so diverse. In the first place, अगर आपने एक करिकुलम पूरे मुल्क पे इम्प्लीमेंट करना है, तो फिर आपको एक सा स्टाफ भी चाहिए होगा, फिर आपको एक सी फैसिलिटीज भी देनी होंगी, राइट? मोस्ट ऑफ द स्कूल्स,
उनमें फैसिलिटीज ही अवेलेबल नहीं होती, उनके टीचर ट्रेंड ही नहीं होते। और जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग ग्रेजुअली इस प्रोसेस की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं, अपने स्कूल्स को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई हैव बीन टू जंडावाला, दैट इज इन डिस्ट्रिक्ट भक्खर। आई वाज पोस्टेड देयर फॉर 4 years। और सना, वुड यू बिलीव मी, आई हैव सीन स्कूल्स, मैंने स्कूल देखे हैं, one room, one wall, and a couple of chairs, and that's it. और वो जो एक कमरा होता था वो प्रिंसिपल का रूम स्लैश ऑफिस होता था, और एक क्लास उस तरह के नीचे हो रही है, एक क्लास उस तरह के नीचे हो रही है, एक क्लास। तो दिस इज व्हाट वी आर वर्किंग विद। फिर गलती कुछ टीचर्स की भी है, इनफैक्ट कुछ नहीं, बहुत ज्यादा। वो कुछ, अगेन हमारा एलिमेंट्री स्कूल और जो बेसिक ईयर्स हैं फ्रॉम 1 till 8th आई वुड से, और इवन मैट्रिकुलेशन, वहाँ पे बच्चों के साथ कुछ ठीक से मतलब उनको टीच नहीं किया जाता है। वुड से देयर इज अ रीजन, धुआं वहीं से निकलता है जहाँ पर चिंगारी होती है। तो देयर इज सम मिस्टेक्स, देयर आर सम प्रॉब्लम्स ऑन द टीचर साइड एज वेल। अगेन मैं यहाँ पे कहूँगा कि पेरेंट्स पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है। एक्चुअली हम कंटेम्प्रेरी दौर में अपने बच्चों को एक सर्टन रोबोट सा बनाना चाहते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट studies, I'm talking about the relationship the kids have with their teachers and the relationship kids have with their parents. तो जहाँ पेरेंट्स को एक मोर कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट ओरिएंटेड रिलेशनशिप बिल्ड करके बच्चों का ट्रस्ट अर्न करना चाहिए, वो बच्चों पर इतनी रिस्ट्रिक्शंस आयद कर देते हैं। यू नो व्हाट हैपेंस कि जब छोटी एज में लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, आपको जितनी शिद्दत से रोका जाएगा वो काम करने का आपका उतनी ही शिद्दत से दिल करेगा। तो teachers, parents and students all need to work towards the betterment of our future, I would say. ओके फाइन, थैंक यू सो मच उमर कि आपने मतलब अपने पॉजिटिव, बट इसका सारा जो है नटशेल ये है कि वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। मेरा जहां तक ख्याल है, जहां तक मुझे समझ में आया, कि अगर हम थोड़ा सा लिखे क्वेस्ट फॉर लर्निंग, गुलशन जिंदानी सेड क्वेस्ट फॉर लर्निंग, यस यू आर वेल सेड। अच्छा जी, अब ये है कि हमारा थोड़ा सा टाइम लिमिटेड होता है जो डिस्कशन का, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको फिर करेंगे जब ये इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। फ्रॉम मार्च से न्यू सेशन से हमारा इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है, और उसके बाद जो इम्पैक्ट होगा बच्चों पर और जो इम्पैक्ट होगा टीचर्स पर, स्टाफ पर, उनकी ट्रेनिंग के हवाले से, या अभी तक तो ये है कि जस्ट हम लोग हवा में बात करें कि टीचर्स की ट्रेनिंग पे भी काम हो रहा है, उनकी वर्कशॉप्स हो रही हैं, एंड दिस एंड दैट के प्राइवेट सेक्टर पे भी है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर इस वक्त सबसे ज्यादा स्ट्रेस में इसलिए है कि उनके रिजल्ट्स इफेक्ट करेंगे। और आपको क्या लगता है कि ग्रेडिंग पे इनकी जो एवेल्यूएशन है, असेसमेंट क्राइटेरिया है, हमारा प्राइवेट सेक्टर का भी आपको पता है कि वो किस तरह से है। नाउ गवर्नमेंट का थोड़ा सा मुझे आइडिया है, बट इतना ज्यादा नहीं है। तो एवेल्यूएशन क्या सेम होगा इनका, एवेल्यूएशन देखिए, क्राइटेरिया ऑफ जो है? कोर्स एवेल्युएशन तो पंजाब स्कूल साइड पे ऑलरेडी होती है, और दे दे हैव बीन वर्किंग ऑन देयर फीडबैक सिस्टम, and their whole monitoring cell is really working on it. Of course there are flaws, of course it has problems, there are rather bunch of problems, not only with the school side, with the college side as well. But then again, we are moving towards sorting them out. पंजाब गवर्नमेंट यूनिसेफ के साथ और ब्रिटिश काउंसिल के साथ एफिलिएशन में काम कर रही है, और क्यूएईसी भी इसी गोल की तरफ, दे आर ट्रेन्ड लाइक hundreds and hundreds of teacher by this time. और अगेन वो लोग जो 70 की और 80 की दहाई की भर्तियां थे, मैट्रिक, पीएसटी एंड स्टफ लाइक दैट, उनकी भी एक किस्म की कांट छांट जारी है। तो एटलीस्ट आई वुड से 80% हम लोग इस कंडीशन में हैं कि हम उसका सामना कर सकते हैं। दिस इज माई परसेप्शन कि हमारे पास जितना स्कूल साइड पे स्टाफ है, 60 to 80% राउंड अबाउट, वो दे आर एलिजिबल टू हैंडल द सेम कोर्स। मतलब वो एमएससी लड़के हैं, मे लड़के हैं, लड़कियां हैं, तो दे कैन डू इट। ओके फाइन, ओके जी, दिस वाज माय लास्ट क्वेश्चन टू यू। और अब जो है हमारा सेशन का टाइम इज ओवर, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इंशाल्लाह आपको दोबारा फिर कहेंगे, क्योंकि आप गवर्नमेंट उसमें फील्ड में हैं। फिर हमें कोई अगर आपकी जरूरत हुई जो आपकी थॉट्स की, या फिर जो इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम देखेंगे कि उसमें कहाँ पे चेंजिंग हो रही है, अब वहाँ पे क्या जरूरत आने वाली है,
फिर इंशाल्लाह उस पर बात होगी. Thank you so much for coming. And what's your last thoughts about the SNC? Finally, आप क्या इसके बारे में कहना चाहोगे? Well, I believe that nothing is permanent but change, and Yes. the only thing that will stay is change. So we should be ready to adapt it. Nelson Mandela said that the strongest weapon that you can have to change the world is education. So No we, doubt. Yes. as Pakistanis, we need to move towards that goal and change the future, inshallah. Inshallah. Okay. Thank you so much for joining us again, Nice once talking to again. you. Signing out. Okay. Bye. Allah Hafiz. Okay. Allah Hafiz, everybody.